Good morning, students. Good morning, students. In this video, we will solve exercise 7.3 of Rajasthan Board of class 12. So, these are some questions of exercise 7.3. So, let's start. Find dy or dx. We have to find dy or dx for the following functions. These functions are given and we have to find out dy or dx. So first part of question first is find dy or dx and the function is 2x plus 3y equals to sin y. So differentiate with respect to x, because we have to find out dy or dx. So we have to differentiate with respect to the denominator, and the denominator is dx. So we have to differentiate this with respect to x. So differentiate 2x plus differentiate 3y with respect to x and differentiate sin y. Okay, now 2 is the constant, so it comes out. So here we get 2 d over dx, now x, plus 3 is the constant, so it comes out, so 3, and here we get dy over dx equals to, now dy over dx sin y. So if we have to differentiate sin x, then we get cos x. If we have to differentiate sin x, then we got cos x. But here is sin y. So differentiate of sin y is cos y, or you can say that again. The identity is differentiate of sin x is cos x, but here we have to differentiate sin y. So here जो हमारा x है उसकी जगह हमारे पास क्वेश्चन में क्या है y. So we get cos, और इस x की जगह भी हमें क्या मिलेगा y. So we get cos y and again differentiate that value that is at the place of x. अगेन एक बार फिर से उस वैल्यू का डिफरेंशिएट कीजिए जो x की जगह है आइडेंटिटी में. सो आइडेंटिटी में हमारे पास x है, बट यहां हमारे पास एक्चुअल में x की जगह क्या है y. सो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए उस वैल्यू का. सो अगेन डिफरेंशिएट y. So we get dy over dx sin y equals to cos y, and again differentiate y, so we get dy over dx. Now we have to find out dy over dx. So those terms which have dy over dx, take all those terms in one side. यानी जिन भी टर्म में dy और dx है उन सभी की सभी टर्म्स को एक साइड ले जाओ. सो देखो इधर हमारे पास वी हैव, यहां पे हमारे पास, अच्छा उससे पहले this is 2 into dx or dx means 1, so 2 into 1 plus 3, so dy over dx as it is रहेगा equals to cos y and dy over dx. so अब जो जिन में y है, एक तो हमारा dy dx इस टर्म में है और एक इस टर्म में है, so इनको हम LHS में ले आते हैं. so 3 dy over dx minus cos y dy over dx equals to, इस 2 को हम साइड चेंज करके उस साइड ले जाते हैं, then we get minus 2. okay, now take the dy over dx common, so we get dy over dx common अगर हम ले, then we get 3 minus cos y, so equals to minus 2. okay, so now we get dy over dx equals to, that is minus 2, this is minus 2, and ये जो वैल्यू है अपॉन में जाके 3 minus cos y, और अगर हम माइनस यहां से कॉमन लेते हैं देन वी गेट 2 अपॉन, देखिए ये माइनस और माइनस कॉमन लिया, देन वी गेट cos y minus 3, और माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट, एंड वी गेट 2 अपॉन cos y minus 3. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, कम टू पार्ट बी, दैट इज now B part is differentiate
B part is x square plus xy plus y square equals to 200. Okay, equals to 200. So differentiate with respect to x, we get d over dx x square plus d over dx xy, okay, plus d over dx y square equals to d over dx 200. Now differentiate of x square is 2x plus यहां हमारे पास there are two function, first is x and second is y. So first into second, or you can say that fx into gx. Okay, so इसका हमें differentiate करना है. So इसका हमें पता है fx is here, fx is x and gx is y. So differentiate of this is differentiate of gx, fx and multiply with gx. Now plus differentiate of gx and multiply with fx. So apply this identity, we get differentiate of x and multiply y plus differentiate of y and multiply with x. Okay, so dx or dx plus x, dy or dx plus now differentiate of this. देखिए, we know that differentiation of x to the power n equals to nx to the power n minus 1, but here we have to differentiate y square. So देखिए, or you can say that x square का differentiation we get 2x. So यहाँ y square का differentiation जो x है उसकी जगह हमारे पास क्या है, y है. So we get 2y and again differentiate that value that is at the place of x. So again dy or dx. So here we get 2y and dy or dx equals to, and differentiation of constant is 0. Okay, now this is 2x plus y dx into dx means into 1 plus x dy or dx plus 2y dy or dx. Okay, अब जिन टर्म्स में and equals to 0, जिन टर्म्स में हमारे पास dy dx है उनको हम LHS में ही रखेंगे, these two terms. So x dy or dx plus 2y dy or dx, इन दोनों टर्म्स को हम साइड चेंज करके अपोजिट साइड दूसरी साइड है उस साइड में ले जाएंगे. देन वी गेट 2x माइनस y. यहां से हम dy और dx कॉमन लें, टेकिंग dy और dx एज कॉमन, देन वी गेट x प्लस 2y. So equals to minus into 2x plus y. So dy or dx equals to minus 2x plus y upon x plus 2y. So this is the solution of B part of question number first. Now come to second question. So the first part of question number second is question number second का first part. Here we get differentiate root x plus root y. Root x plus root y equals to root a. So differentiate with respect to x, we get d over dx root x plus d over dx root y equals to d over dx root a. Okay, so differentiation of root x is 1 upon 2 root x plus differentiation of y is 1 upon 2 root y, and again differentiate the value that is at the place of x, that is y. So again differentiate y equals to a is constant, so square root of constant is also constant, so differentiation of root a is 0. Now take 1 upon 2 root y dy or dx equals to minus 1 upon 2 root x. So हमारा 2 से ये 2 cancel out, then we get dy or dx equals to minus root y upon x. So this is the value of dy or dx for question number second A. Now come to B part of question number 2, that is
b part is tan x plus y. So b part is tan x plus y plus tan x minus y equals to 4. So differentiate with respect to x. So d over dx tan x plus y plus d over dx tan x minus y equals to d over dx 4. Okay, so differentiation of tan is, देखिए we know that differentiation of tan x equals to sec square x. So अगर हम कंपेयर करें tan की जगह tan और जो x है उस x की जगह हमारे पास है x plus y. So d over dx tan x plus y equals to sec square, और जो x है x की जगह x plus y है, so यहाँ भी x की जगह हमारे पास x plus y, and again differentiate the value that is at the place of x, that is x plus y. So d over dx tan x plus y equals to sec square x plus y and d over dx x plus y. So here we get sec square x plus y and again differentiate x plus y. Now same in the same way tan x minus y का differentiation is sec square x minus y and again differentiate x minus y, and 4 is constant, so differentiation of 4 is 0. Okay, now here we get sec square x plus y and this value becomes dx over dx plus dy over dx. x का separate differentiation, y का separate differentiation, plus sec square x minus y and differentiation of x minus differentiation of y separate and equals to 0. Okay, now देखिए dx equals to 1. So here we get sec square x plus y into dx upon dx equals to 1 plus dy over dx plus sec square x minus y and dx upon dx equals to 1 minus dy over dx equals to 0. Now multiply with this one, so we get 1 से हम अगर हम multiply करें then we get sec square x plus y into 1, so this value, then dy over dx को इससे multiply करें then we get plus sec square x plus y and dy over dx plus sec square x minus 1 को multiply किया then we get sec square x minus y, then multiply with this one, so we get minus sec square x minus y and dy upon dx equals to 0. Okay, equals to, this is value 0. Now देखिए हमारे पास dy dx यहाँ इस टर्म में है और इस टर्म में हमारे पास dy over dx है. So इन दोनों टर्म्स में से अगर हम dy over dx कॉमन लें, dy over dx इन दोनों टर्म्स से अगर हम कॉमन लें देन हमारे पास यहां रहेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई. ओके, और ये दोनों दो टर्म्स हैं दिस वन एंड दिस वन, इसका हम डायरेक्शन अगर चेंज करें, साइड चेंज करें देन वी गेट इक्वल्स टू माइनस, हियर वी गेट sec स्क्वायर x plus y and plus sec square x minus y. Okay, now dy over dx is minus sec square x plus y plus sec square x minus y upon sec square x plus y minus sec square x minus y. Okay, so this is the solution of B part of question number 2, that is sec square x plus y plus sec square x minus y upon sec square x minus y एंड दिस वन. अगर यहां से हम कॉमन लें, नेगेटिव सिंबल अगर हम कॉमन लें, सो यहां से नेगेटिव सिंबल कॉमन आके कैंसिल आउट होके देखिए इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास नेगेटिव सिंबल है,
So this is negative. Here we get sec square x plus y plus sec square x minus y अपॉन, यहां से भी अगर हम नेगेटिव सिंबल कॉमन लें देन वी गेट sec square x plus y एंड माइनस sec स्क्वायर, देखिए यहां से नेगेटिव सिंबल कॉमन लिया देन इट बिकम्स प्लस x माइनस वाई एंड माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई. ओके, सो ये माइनस और ये माइनस हमारे से कैंसिल आउट एंड वी हियर वी गेट sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec square x plus y. So this is the value of dy or dx. Now come to a part of question number 3rd, that is for a part of question number 3rd, sin x, third a, sin x plus 2 cos square y plus xy equals to 0. So differentiate with respect to x, we get d over dx sin x plus d over dx 2 cos square y plus d over dx xy equals to differentiate of 0. So sin x का differentiation we get cos x, so this is cos x plus 2 is constant, so ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, so 2. Now differentiation of cos square y, so cos square y can be written as cos y का whole square. Okay, प्लस यहां हमारे पास fx into gx, जैसा हमने यहां पे देखिए फर्स्ट के बी पार्ट में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, सेम यहां हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, सो वी गेट वाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 का डिफरेंशिएशन 0. सो हियर वी गेट cos x प्लस 2. नाउ यहां हमारे पास अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन की आइडेंटिटी. सो कंपेयर करें, n की जगह हमारे पास 2 एंड x की जगह हमारे पास है cos y. Cos y is at the place of x. So differentiation of this is 2 cos y and now differentiation of that term that is at the place of x, that is cos y. So differentiation of cos y. देखिए यहां इसमें तो हमने x to the power n अप्लाई किया है, so n and x to the power n minus 1, so 2 minus 1 1, so cos y की power 1 and again differentiate cos y. So cos y plus here y into 1 plus x and dy or dx equals to 0. So here we get cos x plus 2 into 2 4 cos y and differentiation of cos y is minus sin y and again differentiate y. देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बट यहां हमारे पास y है x की जगह, so minus sin y and again differentiate value that is at the place of x, that is y plus y into 1, so we get y plus x dy or dx equals to 0. So we get here cos x and plus into minus, so we get minus. Okay, so you can say that 4 sin y cos y dy or dx plus y plus x dy और dx equals to 0. अब हमारे पास dy और dx यहां है और dy और dx यहां है, सो इन दोनों टर्म से अगर हम dy और dx कॉमन लें देन dy और dx यहां से कॉमन आया देन यहां तो रहेगा x और इस टर्म से dy और dx कॉमन आएगा देन वी गेट -4 sin y cos y. ओके, और ये जो हमारी टर्म है, जो रिमेनिंग टर्म्स, इनको हम साइड चेंज करके उस साइड ले जाएं देन वी गेट माइनस cos x उस साइड गया देन
cos x एंड प्लस y, साइड चेंज होगा सो y बिकम्स नेगेटिव, सो नेगेटिव को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया. नाउ dy or dx, now dy or dx can be written as minus cos x plus y upon x minus 4 sin y cos y. सेम ऊपर नेगेटिव है, सो यहां से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले और कैंसिल आउट करें, देन वी गेट cos x plus y upon 4 sin y cos y and minus x. So this is the differentiation of this is the differentiation of first part of question number 3. Now this 4 sin y cos y you can write as 4. This is correct, or this 4 can be written as 2 into 2. This 4 can be written as 2 into 2. Now this can be written as 2 into 2. 4 can be written as 2 into 2, and now this 2 sin y cos y, this value can be written as sin 2a, because 2 sin a cos a is equal to sin 2a. So this value can be written as cos x plus y upon 2, this 2 and 2 sin y cos y equals to sin 2y and minus x. So this is the solution of A part of question number 3. Now come to B part. Third B, differentiate B part is x root y plus y root x equals to 1. So differentiate x root y plus differentiate y root x equals to differentiate 1. So यहाँ पे again x and y है, so we apply fx into gx. So here we apply fx into gx, so it becomes first का differentiation, first is x, so इसका differentiation, and second multiply plus differentiation of second, that is root y, and first is multiply. So ये जो value है इसका solution this one, plus now come to this one. So first into second again यहाँ apply होगा. So first का differentiation means y and root x हमारा multiply plus differentiation of second one, that is root x, and first is multiply, and differentiation of 1 is 0. Now root y into 1, because dx upon dx is 1, plus x. Now यहाँ apply होगा root x का. So देखिए we know d over dx root x is 1 upon 2 root x, but here we have to differentiate d over dx root y. So x की जगह हमारा क्या है, y, so हमें मिलेगा 1 upon 2, x की जगह पुट कर देंगे y, and again differentiate उस वैल्यू का जो हमारी x की जगह है, that is y. So यहां हमें मिलेगा इसका differentiation 1 upon 2 root y and dy upon dx. Now plus root x, and ये हमारा as it is dy over dx, plus this is y, and differentiation of root x is 1 upon 2 root x equals to 0. अब देखिए हमारे पास dy over dx हमारा एक तो इस टर्म में है और एक हमारा यहां इस टर्म में है. सो यहां से हम dy over dx कॉमन लेंगे, देन वी गेट रूट x प्लस 1 अपॉन 2 रूट y. यहां से लिया, देन वी गेट रूट x, यहां से डिवाइड x कॉमन लिया, देन वी गेट 1 प्लस 2 रूट y, एंड दिस इज x ऑल्सो, दिस x ऑल्सो, दिस x इज ऑल्सो कम्स हियर. सो रूट x प्लस डिवाइड x कॉमन आ गया, देन वी गेट x अपॉन 2 रूट y. अब हमारे पास एक तो रहा रूट y, सो साइड चेंज होगा, देन वी गेट माइनस रूट y, और एक ये वाली जो वैल्यू है, सो इसका भी साइड चेंज होगा, देन वी गेट y अपॉन 2 रूट
x. Okay. Now it can be written as dy over dx. Take LCM 2 root y. So यहाँ पे हमारे पास 0 अपॉन में 1. So it can be written as, देखिए 1 से y times. So this multiply this one, then we get 2 root x y plus ये 1 times. So we get x equals to minus, यहाँ हमारे पास LCM 2 root x. So here we get, यहाँ भी हमारे पास अपॉन में 1 ले सकते हैं, we can take 1. So यहाँ हमारे पास होगा 2 root x root y plus y. Okay. Now dy over dx can be written as, now dy over dx can be written as minus 2 root x root y plus y upon 2 root x into 2 root y upon 2 root x root y plus x. देखिए ये टू हमारा कैंसिल आउट. ओके. एंड देखिए रूट y and y. So now 2 root x into root x equals to this negative symbol, and take root y common from numerator. देखिए root y and this y can be written as root y into root y. This y can be written as root y into root y. So root y can be take as common. So यहाँ पे हमारे पास root y we take the common. So यहाँ हमारे पास into 2 root x, root y common आ गया, plus I am writing here this is minus. So हमारे पास यहाँ से root y common, then we get 2 root x plus root y upon root x. इन सिर्फ यहाँ से जो हमारा डेनोमिनेटर जो पार्ट है, देखिए रूट वाई हमारा ऑलरेडी यहाँ है, अपॉन जो डेनोमिनेटर पार्ट है वहां से मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ. सो रूट एक्स एंड हियर वी गेट 2 रूट वाई प्लस रूट एक्स. ओके. नाउ दिस इज नेगेटिव सिंबल, दिस इज माइनस, एंड रूट वाई इंटू रूट वाई, रूट वाई इंटू रूट वाई वी गेट वाई, root x into root x we get x upon with, and now this value upon this value. So here we get 2 root x plus y upon 2 root x plus root y upon 2 root y plus root x. So this is the differentiation of third B. This can be solved like this. So this is the solution of and B part of question number 3. Next question number 4A is differentiate x square plus y square whole square equals to xy. So fourth A, we have to differentiate x square plus y square whole square plus equals to xy. So differentiate with respect to x, we get d over dx. देखिए it can be written as x to the power 4. If we solve this can be written as x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2x square y square. A plus b का whole square, it can be written as a square plus b square plus 2ab equals to d over dx x into y. Okay. Now differentiate separate. So differentiate x to the power 4 plus differentiate y to the power 4. इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन टू 2 तो हमारा कॉमन है. सो इट कम्स आउट नाउ d over dx x square and a y square.
equals to d over dx xy. Now x to the power 4 का डिफरेंशिएशन we get 4x cube plus y to the power 4 का डिफरेंशिएशन 4y cube and again differentiate of y because यहां हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो x to the power 4 का 4x cube, बट यहां हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारे पास यहां y है, सो डिफरेंशिएट ऑफ y प्लस देखिए 2 यहां पे हमारे पास सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, देन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सेम कंडीशन हमारे पास यहां होगी डी ओवर डी एक्स, पहले एक्स का वाई मल्टीप्लाई प्लस फिर डिफरेंशिएशन होगा वाई का एंड एक्स मल्टीप्लाई. Okay, now it can be written as 4x cube plus 4y cube dy over dx plus now 2 into this is y square into differentiation of x square is 2x plus x square and differentiation of y is 2y and again differentiate of y with respect to x equals to y x का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1, सो इनटू 1 प्लस x एंड dy ओवर dx. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy ओवर dx प्लस 2 into 2 4xy स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 x square y dy over dx equals to y plus x dy over dx. ओके, अब जिन टर्म्स में dy over dx है उनको हम LHS साइड में लिख लेते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज दिस वन, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस. सो जब ये इस साइड में LHS में होंगी और इनमें से हम dy over dx कॉमन लेंगे, देन वी गेट here 4y क्यूब, यहां से 4y क्यूब, यहां से हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर y, और ये जो टर्म जब LHS की साइड आएगी देन इट बिकम्स नेगेटिव एंड x. ओके, और एक ये वाली टर्म विदाउट dy over dx, एक ये टर्म विदाउट dy over dx, देखिए दिस वन एंड दिस टर्म, और एक ये वाली टर्म, इनको हम RHS साइड में रखते हैं. सो यहां ऑलरेडी y RHS में है. ओके, तो ये टर्म साइड चेंज होगा देन इट बिकम्स माइनस 4x क्यूब, तो ये टर्म साइड चेंज होगा देन इट बिकम्स माइनस 4xy स्क्वायर. ओके, नाउ dy over dx, नाउ dy over dx इक्वल्स टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब plus 4x square y minus x. So this is the value of dy or dx. So it can be written as y minus 4x cube and minus 4x square upon 4y cube plus 4x square y minus x. This value is 4xy square. So 4xy square. Okay, देखिए y minus 4x cube, y minus 4x cube minus 4xy square minus 4xy square अपॉन ये वाली जो वैल्यू है ये अपॉन में हो जाएगी. So this is the solution of A part. Now come to part B. So now B part is part B is sin xy plus x upon y equals to
x square minus y. So differentiate with respect to x, we get d over dx sin xy plus d over dx x upon y equals to d over dx x square minus d over dx y. Okay, so differentiate of sin xy, so sin x का डिफरेंशिएशन cos एंड हमारे पास x की जगह xy एंड अगेन डिफरेंशिएट दैट वैल्यू दैट इज एट द प्लेस ऑफ x. सो x की जगह हमारे पास वैल्यू है xy, सो अगेन डिफरेंशिएट, सो इसकी वैल्यू बिकम्स दिस वन प्लस नाउ अप्लाई gx अपॉन fx, sorry fx upon gx, so square of gx, then gx differentiation of fx, so x minus fx and differentiation of gx, so y. Here we apply d over dx fx upon gx, or you can say that d over dx u upon v sorry, equals to differentiation of x square is 2x minus dy over dx. Now solve this, so it becomes cos xy, then differentiation of this is differentiation of x multiply by y plus differentiation of y and multiply by x plus y dx upon dx equals to 1, so minus x dy upon dx upon y square equals to 2x minus dy upon dx. सो देखिए यहां हमारे पास y स्क्वायर है, सो टेक एलसीएम एज y स्क्वायर, सो LHS से अगर मैं एलसीएम लेता हूं y स्क्वायर, सो यहां अपॉन में कुछ नहीं है, वी कैन अज्यूम हियर 1, सो y स्क्वायर एलसीएम आ गया, y स्क्वायर एंड 1 का एलसीएम 1, सॉरी एलसीएम y स्क्वायर, सो 1 से हम डिवाइड करेंगे y स्क्वायर को y स्क्वायर टाइम्स, सो मल्टीप्लाई दिस वन, सो वी गेट y स्क्वायर कोस xy into y and dx upon dx 1 plus x dy over dx plus y minus x dy over dx equals to 2x minus dy over dx. ओके, नाउ ये जो हमारा y स्क्वायर है डिवाइड में है, जब साइड चेंज होगा देन इट comes into multiply with this term, so it can be written as y square cos xy. देखिए y square multiply with this y, so it becomes y cube, so y cube cos xy, then this term multiply with this one, then we get x y square cos xy dy over dx plus y minus x dy over dx, and this y square will multiply with this term, so it becomes equals to 2xy square minus y square dy upon dx. ओके, नाउ अब जिन टर्म्स में हमारे पास dy और dx है उन टर्म्स को LHS साइड में हम शिफ्ट करेंगे एंड टेक dy और dx एज कॉमन. सो हमारे पास एक फर्स्ट टर्म तो ये है, यहां से मैं dy और dx कॉमन लेता हूं, देन वी गेट एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई. ओके, एक हमारे पास dy dx इस टर्म्स में है, सो वी गेट माइनस एक्स, और एक हमारे पास dy और dx इस टर्म में है, जब ये साइड चेंज होकर इस साइड आएगा देन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड वी गेट वाई स्क्वायर. ओके, नाउ जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आरएचएस साइड में ले जाओ, सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2xy स्क्वायर है. ओके, एक ये वाली टर्म जो हमारी साइड चेंज होगी देन इट बिकम्स नेगेटिव, सो माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई कोस एक्स वाई. ओके, ये टर्म हो गया. एक हमारे पास ये वाली टर्म है पॉजिटिव वाई, सो जब साइड चेंज होगा देन इट बिकम्स माइनस वाई. नाउ dy ओवर dx, ये हमारा मल्टीप्लाई वाला जो पोर्शन है ये साइड चेंज होगा देन इट बिकम्स इनटू डिनोमिनेटर पार्ट एंड dy एंड dx विल बी 2xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस xy माइनस y अपॉन
here xy square cos xy minus x plus y square. So this is the value of dy or dx. So these are the questions of exercise 7.3 from question number 1 to 4. The remaining question of exercise 7.3 we will discuss in our next video. Thanks.